So, we were discussing vector fields on a smooth manifold, and we realized that we can perform some algebraic operations on vector fields also. So, if x, y are vector fields on a manifold M, that is chi M, where M denotes a smooth manifold of dimension n all the time, then we define the operation of addition on the vector field. Vector fields are object which operates on functions to produce functions satisfying Leibniz property and linear property. So, the sum will operate on a function, it is given by xf plus yf. This is how the sum of two vector field was defined. Similarly, you can multiply, and under this addition the chi M becomes an abelian group. Second operation was the multiplication of a vector field by a smooth function f. So, when fx operates on another function g, it was given by f times x into g. This operation is also well behaved, it is compatible with addition, and therefore, under these two operations chi M becomes a module, in fact a left module. So, we observed over here that chi M is a module, is a left module. Over C infinity M. C infinity M is the space of all real valued function, differentiable real valued function on M. This forms a ring. All right. Then we thought of multiplication of vector fields. So, the product of two vector field is denoted by the symbol Lie bracket xy. And once again it is a vector field, so it should operate on function, and the definition that emerged was xyf minus y xf. So, the right hand side is a function, and moreover one can check that this definition is well defined. In fact, it satisfies the Leibniz property and the linear property. Perhaps I had checked it also, and these three operations are compatible. So, in fact, not only chi M is a module, under this product it becomes an algebra. So, finally, we say that chi M with these three operations, addition, the multiplication by functions, and the Lie product. So, this becomes an algebra over C infinity M. And since the product over here is a Lie product, we call it a Lie algebra. So, this is Lie algebra of Lie vector fields, Lie algebra of vector fields, Lie algebra of vector fields on M. Yes, so these are some of the things which I discussed in my last lecture. Today I will be talking about some more important properties of the Lie bracket. So, some other properties of Lie bracket. There are some immediate observations. If you look at the definition, this one, you can immediately notice that the Lie product is skew symmetric, means xy equal to minus time yx. This follow from here straight away. And as a consequence of this, I can say that the Lie bracket of x with itself will always be 0. Okay. These are some obvious observations. Secondly, if you consider Lie bracket x plus y, I need to check the compatibility of the Lie product with addition. So, x plus y z
In fact, this is the left distributive property, right distributive property. So here you will be getting xz plus yz. Okay, same thing in the second slot also, because of this property. If you, in place of z, you write down y1 plus y2, again you will see distributive property hold. If you wish, you can write down. Similarly, x y plus z will be equal to xy plus xz. Okay, and the third one is, if you consider fx and gy, or first you consider x, y, z, and you consider the cyclic sum y, z, x plus, yes, zx, y. This sum will be 0 for all vector field x, y, z on M. That is also easy, I hope. Bracket is again a Lie bracket of the cycle. Yes, Lie bracket of two vector field is a vector field. You take its Lie product with z and so on, and the sum will be 0, but it can be checked easily. For example, you take the first term x, y, z. Let me operate it on a function f. So it will be Lie bracket x, y operating on zf minus z operating on Lie bracket x, y operating on f. And then you further simplify it. So this can be regarded as a new function. You may call it g. So x, y operating on g, x, y operating on zf minus y operating on x operating on zf. Similarly over here, minus z operating on xyf, then minus minus will become plus, z operating on y operating on xf. This is the first term. Now the second and the third term you can write without actual computation. For the second term, what I will be doing, I will be replacing x by y, y by z and z by x. देखिए यहाँ पे x की जगह y हो गया, y की जगह z हो गया, z की जगह x हो गया. So the second term you can write down over here. Okay. So this is x की जगह y, y की जगह z, z की जगह x and then f. Okay. And minus y की जगह z, x की जगह y और z की जगह x. And then minus x, y, zf. Okay. Then plus x, z की जगह x, z and x की जगह y. Once again you cyclically permute and write down the third term. This is second term. This is second term, so this is plus. Okay. Then again plus the third term. Now y की जगह z, z की जगह x, x की जगह y, y की जगह. Okay. And then minus x, y. Then minus okay, then plus
Okay, now you look at all the term, you will notice that all terms are cancelled out. X, Y, Z, F कहीं दिख रहा है? X, Y, Z, F, X, Y, Z, F. Y, X, Z, F है कहीं? Y. Y, X, Z, F plus minus. Then Z, X, Y, F, Z, X, yeah, this is Z, X, Y, F. ZX YF, then ZYXF, ZYXF ये है, ठीक है, ZYXF, and then you have X, ये कुछ गलत लिख दिया, अच्छा ये YZXF, 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 और XZYF ये हो गया, ठीक है. So all that were correctly written. So the sum becomes. So this identity involving Lie bracket is called the Jacobi identity. We call it Jacobi identity. Alright, and then we have multiplication by function. So this was number 3, and now come to number 4. Consider the Lie bracket of fx and gy. F, g, etc. they always denote real valued functions. X, y denote vector fields. So this is equal to f operating on xg into y minus g operating on yf into x plus Lie bracket fg times Lie bracket xy. ये उस टाइप की लीनियरिटी नहीं है इसके अंदर. It is not bilinear in that sense, yes. Okay, so it is little different. But that is the law that it satisfied. One can check it up. So to check it up, I will operate this on a function h. H is a real valued function on M. So first apply the definition. So by definition, fx will operate on gy and gy will operate on h. Okay, g times yh. Okay, minus gy and then fx operating on h. Okay, so you can put a dot. Okay, now we can simplify. So fx, so here fx means f into x. So f you keep outside, x operating on the product of two functions. So this is the first function, this is the second function. So by Leibniz rule, xg into yh as it is, and then plus g as it is, x operating on yh. Same thing over here, you keep g outside and y operating on f into xh, and then plus f as it is, y operating on xh. Okay, now you simplify it. So this is fx operating on g into yh. Okay, और f को ऐसे लिख लीजिए चाहे xg into yh plus fg xyh minus gyf into xh. अब ब्रैकेट में कहीं बना रहा हूँ कहीं नहीं बना रहा हूँ, वो इमेटीरियल है. यू कैन अंडरस्टैंड वाई एफ को एक साथ लिखने से ये हो जाता है कि ये फंक्शन है. ठीक है,
और अगेन लास्ट टर्म इज माइनस जी एफ या एफ जी एक ही बात है, तो वाई एक्स एच। ठीक है, अब ये दो टर्म मैं एक साथ लिख लेता हूँ। एफ जी इज कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स and it is equal to fg times Lie bracket xy. You can see it operating on h. Okay, and now you write down the other terms. So plus f of xg y. H I will write down outside. In each term h is there. Minus g times yf into x, and the whole thing is operating on h. The left side is also operating on h, so you forget about h and you will notice that you have got it. Okay, so this gives me another property of Lie bracket. So this was number 4. आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ और बताना चाहूँगा कि if you are given, if f is any real valued function on M and x, y are vector fields on M, they are all C infinity objects. So there are two ways you can combine the function with vector fields. One is this, f into x, and the other thing is x into f. Okay, one has to be careful. When f is sitting on the left of x, it becomes a vector field. So we need to notice over here that fx is a vector field, means it is a member of chi M. और ये इस वजह से है कि जो स्पेस ऑफ फंक्शन है वो एक्ट करता है फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द स्पेस ऑफ वेक्टर फील्ड। जब आपने मल्टीप्लिकेशन बाय फंक्शन डिफाइन किया था उस वक्त ही हमने ये देख लिया था कि f जो है वो लेफ्ट से एक्ट करता है किसी वेक्टर फील्ड पे to produce a vector field. Okay, so fx is a vector field, whereas xf, x itself is regarded as a derivation, means it satisfies linear property and the Leibniz property. So when x operates on function, it produces function. So this object is in fact a function on M. ठीक है, तो कभी कभी बच्चे कन्फ्यूजन में इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं समझते और गलत लिख देते हैं, तो वन हैज़ टू बी केयरफुल while looking at these expressions. So now if I ask you what will be fx at a point P, you are saying it's a vector field. So at a point P it must be some tangent vector. So what will be that? So this will be in fact be equal to fp into xp. ठीक है, so this you can regard it as a note. ठीक है, this is a remark rather. And how you say that it is equal to this much? There must be some argument. Look here, suppose locally I am writing x equal to some xi I del upon del xi. So fx will be what? This implies fx will be f times xi into del upon del xi. ठीक है ना, f फंक्शन है तो वो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो गए, so it becomes a new real valued function. Now if you want to know it at a point P, so you just see it at a point P. So a functions time this, so it means f of p into xi I p into del upon del xi at p. This is what it should be. ठीक है, so now fp is okay and this is xp. That is what I have written. So logic comes from the local expression as well. Okay. If I look at the second term, xf, what will be this at a point P? Okay, this will be what?
it will be xp operating on f. सेम लाइन पे अगर आप चलेंगे तो फिर यहाँ पे भी इसका भी आपको रीज़न मिल जाएगा कि ये इसकी बराबर कैसे है। तो एक्स एफ को लिखिए पहले, एक्स को आपने लोकली लिखा जाई आई डेल अपॉन डेल एक्स आई, ठीक है ना, और एफ पे ये ऑपरेट कर जाएगा तो ये, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू एट ए पॉइंट पी देखिए, तो इस पूरे की वैल्यू एट ए पॉइंट पी देखनी पड़ेगी। सो नाउ दिस इज़ व्हाट, this is a function, del f upon del xi is a function, xi i's are all function, you have a linear combination. So function into function operating at a point, real valued है सब, so that means the value of this function at p multiplied by value of this function at p. So it will be xi I p into del f upon del xi at p, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, दिस इज जाई आई पी इंटू डेल अपॉन डेल एक्स आई एट पी ऑपरेटिंग ऑन एफ विच इज प्रिसाइजली एक्स पी। सो दीज टू थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड, द वैल्यू ऑफ दिस, यस। एंड वाई आई वॉज आस्किंग अबाउट दिस टू, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द ली ब्रैकेट एट ए पॉइंट पी, ओके। Yes. So number 5. Acha, everywhere one has to keep in mind when I write down xi I at many places local expression. So xp का जो expression है tangent vector का, that is xi I del upon del xi. With these xi i's are scalars, okay. और ये xi I जो है, how do you obtain these scalars? That is obtained by operating xp on coordinate functions xi. So this should be kept in mind. Now in place of p, in place of xp, if I have x, the vector field x, if you have vector field x, then we write its local expression as some function time del upon del xi. Now these are functions. So if you compare, you can notice over here, then over here this function xi I will be equal to x operating on xi. अब इसकी वैल्यू एट ए पॉइंट p लूँगा तो दिस विल बी xp ऑपरेटिंग ऑन xi. Is it right? Which will become a scalar. Yeah. This is general form. This is particular form. No, this is not general or local. It is local. This is global. X is global. This is global, but this is This is at a point. At a point P. At a point P. Particular value. Yes. So this is, अब आप इसकी वैल्यू देखना चाहें xi I at p, तो what it will be? It will be xp xi, यहाँ से xp xi, ठीक है ना। So this should be kept in mind. Because xi is for a global vector field, it is x operating on coordinate functions xi. All right. Now come to the fifth property. Fifth property is if I have a Lie bracket of two vector field xy, you know how it is defined. It is defined by this rule xyf minus yxf. If I ask you what will be this at a point P, Lie bracket at a point P will become a tangent vector, and tangent vector operating on a function will give you scalar. अब यह आप हर जगह अगर आपने P लगा दिया, for example I did like this at a point P. Now you see whether it makes sense. YPF will become what? It will become a scalar. XP operating on this scalar will become 0. Tangent vector operating on scalars will give you 0. Similarly, this will be 0. So everything will become 0. So don't put P like this.
it is in fact equal to xp operating on yf minus yp operating on xf. So the rule is that the Lie bracket at the point P operating on f, it is xp yf minus yp xf. रीज़न समझ लेना चाहिए इसका. अगर p मिटा दें, so this will be equal to xyf minus yxf. अब now I want to check it at the point P. तो ये एक तरह से ऐसा हो गया. I want to check it at the point P. So जैसे कि ली ब्रैकेट को मैं एट ए पॉइंट P देख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? XPF हो जाएगा. XPF हो जाएगा नहीं हो जाएगा? So I am checking it at the point P. So I must check it at the point P. I must check it at the point P. It's a difference of two functions, and the difference of two functions at a point is first term at P minus second term at P. So now, अब ये हो गया. इसको थोड़ी देर के लिए G समझ लीजिए, सेकेंड टर्म को. तो ये x ऑपरेटिंग ऑन G इवेल्युएटेड एट P, xg ऑपरेटिंग एट P evaluated at P is xpg. Am I right? So it must be equal to this one. It should be xp of yf. Again from the same formula, the second term will be yp operating on xf. Alright? So this is the rule. Whenever you are evaluating a vector field at a point P, it must be xpyf minus ypxf. अगर p दोनों जगह लगाया तो वो फिर गलत हो जाएगा. ओके, और क्या बात थी? ओके, अगर दोनों जगह p लगा दिया 0 हो जाए, तो ली ब्रैकेट की वैल्यू हर पॉइंट पे 0 हो गई, तो ट्रिवियल वेक्टर फील्ड हो गई. तो वो नहीं. अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज द लोकल एक्सप्रेशन ऑफ द ली ब्रैकेट. लोकल एक्सप्रेशन फॉर ली ब्रैकेट. Okay? Yes. Suppose you are considering a vector field locally. It is a global vector field, but I am looking its expression at some coordinate neighborhood u del upon del xi. Okay? So on a coordinate neighborhood uxi, a vector field is given by this. There is another vector field whose expression on the same coordinate neighborhood is eta j del upon del xj. Okay. I want to find out the local expression for Lie bracket xy. So if I operate it at f, a function f, by definition it will be xyf minus yxf. Now x yf, y is this, so it will be eta j del f upon del xj minus y xf will be xi I del f upon del xi. Okay. We need to simplify it further. Okay. So x is also equal to xi I del upon del xi. So the first term in the right side is xi I del upon del xi operating on eta j del upon del xj del f.
minus y means eta j del upon del xj operating on xi I del f upon del xi. Now in the bracket I have a product of two functions, eta j is one function, del f upon del xj is another function, and del upon del xi as a vector field is operating on this product. So apply the Leibniz rule. So by Leibniz rule, this will become equal to del eta j upon del xi del f upon del xj as it is, plus eta j as it is delta 2f upon del xi del xj. Am I right? And then okay, minus eta j out, same thing over here, del xi I upon del xj into del f upon del xi as it is, and then minus okay eta j पहले ही कॉमन ले रखा है आपने, xi I as it is del 2f upon del xj upon del xi. ये फंक्शन f को आपने अच्छा प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है. ओके, आई एम सॉरी. ओके, what I was saying, since f is C infinity differentiable, if you are dealing with a function which is differentiable up to class more than 2, then partial derivative of second order will commute. So this derivative and this derivative will commute. यहाँ पे भी eta j xi I आ रहा है और यहाँ पे भी eta j xi आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए. So what I have got here is xi I into del eta j upon del xi into del upon del xj minus eta j into del xi I upon del xj del upon del xj, no del xi, and f is out. Okay. Okay, I want to take del upon del xi also out. तो उसके लिए करेंगे, ये सब जगह समेशन है. whenever you see a dummy index, summation is understood. So if you want to take I del upon del xi common, make it I. So you replace j by I. So इस I को फिर j करना पड़ेगा, इसको j कर दीजिए. This is how you change the name of dummy indices. So what you get is xi j into del eta I upon del xj minus eta j into del xi I upon del xj multiplied by del upon del xi of f. And what is the left side? Lie bracket xy operating on f. Since f is arbitrary, so you rub it off from both sides. So this becomes an expression for local expression for Lie bracket xy. So कोई भी Lie bracket of xy, कोई भी vector field xy is always equal to some functions time del upon del xi with dummy index. So ये dummy index हो गई, so ये dummy index हो गई, ये भी डमी इंडेक्स है, तो इसका समेशन तो यहीं तक है. ये भी डमी इंडेक्स है, इसका समेशन यही है, और पूरे पे आई पे समेशन हो रहा है वो बाहर. लेफ्ट साइड टर्म्स आर फंक्शन, दिस फर्स्ट टर्म, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन. डिफरेंस ऑफ फंक्शंस. So this is the difference of two functions is a function. So functions time del upon del xi is a vector field. So this is a vector field Lie bracket xy. Okay. So this is how you can work out
local expression for Lie brackets. There is another important thing about Lie bracket, and that is number 6. अगर आप Lie bracket कंसिडर कर रहे हैं बेसिक वेक्टर फील्ड्स की, एट ए पॉइंट कंसिडर कीजिए तो ये डेल अपॉन डेल एक्स साइज जो है ये बेसिक टेंजेंट वेक्टर्स होते हैं, मगर अगर आप इसको पूरी नेबरहुड पे कंसिडर कर रहे हैं तो ये वेक्टर फील्ड हो गए, और इन वेक्टर फील्ड को हम बोलते हैं कि ये बेसिक वेक्टर फील्ड्स हैं. यस, एट ए टेंजेंट स्पेस की ये बेसिस बन जाते हैं. वेक्टर फील्ड चूँकि वेक्टर स्पेस नहीं है इसलिए वहाँ बेसिस कहना ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल वी कॉल देम बेसिक वेक्टर फील्ड्स. ओके, so this product will become 0. And simple reason is you just operate it on f. You just operate it on a function f. You will be getting del upon del xi of del f upon del xi xj minus del upon del xj operating on del f upon del xi. So ये मिक्स डेरिवेटिव वन है, ये इक्वल होते हैं क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑफ क्लास सी इन्फिनिटी है, तो ये दोनों बराबर होके 0 हो गए. और दिस हैपेंस फॉर ऑल फंक्शंस, सो देयरफॉर दिस इक्वालिटी इज ट्रू. So this is about the properties of the Lie bracket, and if you have any question you can ask me. कोई कुछ बच तो नहीं रहा, कोई ख़ास प्रॉपर्टी जो मैं भूल रहा हूँ, यही है. ओके, सो नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. एफ एक्स जी वाई. अब देखो ऐसा है ना, हमने एफ और जी दोनों लेके कर दिया. अब जिसको जी चाहे 1 रखना चाहो 1 रख लो, नहीं रखना चाहो नहीं रखो, हमने तो जनरल प्रूव कर दिया. अब एज ए एक्सरसाइज सम टाइम आई आस्क दिस, बट दिस इज नॉट ए सेपरेट. आप जी को 1 रख दीजिए अपने एक्सप्रेशन में, यू विल गेट. सर आपने ये ली ब्रैकेट का एक्सप्रेशन पूछा था, हम लोगों से सेस लंबी मस्ती में. हाँ. बहुत सबने मतलब कोई कर ही नहीं पाया था, एक दो कुछ हो गए. अच्छा, मगर इसमें कोई ऐसी ख़ास दिक्कत है नहीं, वो कुछ हो गया होगा, बट दैट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग इन फैक्ट. सारे लड़कों की बैठ आई थी सेस मतलब. अरे अच्छा, okay, maybe the student should give me a feedback. I don't know whether my speed is too fast or too slow. I don't know. If they want me anything, they must tell me. All right. अब अगली जो बात मुझे करनी है वो है differential of a map. Differential of a map. देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बताऊँ. आपने मैनीफोल्ड के केस में फंक्शंस कंसीडर करे, रियल वैल्यूड फंक्शन एंड फंक्शंस फ्रॉम मैनीफोल्ड टू मैनीफोल्ड, एंड यू सेड दे आर डिफरेंशिएबल इफ दे सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस. वंस ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट इट्स डेरिवेटिव. हाउ टू कंप्यूट द डेरिवेटिव? नाउ यू गो बैक टू आर एन सेटिंग, वहाँ पे भी डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन है एंड यू नो हाउ टू कंप्यूट इट. In fact, differential of a function f is a linear map. Okay, over here the linear map from manifold to manifold will not make sense because manifold is a non-linear space. In general, it is a non-linear space. Particular case में Rn ही ले लो तो linear हो जाएगा, otherwise it is a non-linear space. तो फिर इसका differential कैसे define करेंगे? तो to make differential of a map a meaningful object, what we did, we defined the tangent space. So to every point of a manifold you have associated a linear space, and differential of f will act on tangent vector. The space of tangent vector is a linear space.
इज इट राइट? और वहाँ पे भी अगर आप देखें, जब आप कर्व कंसीडर करते थे तो डेरिवेटिव जो है वो टेंजेंट वेक्टर पे ऑपरेट करता था, डिफरेंशियल सरफेस में भी टेंजेंट वेक्टर पे ऑपरेट करता था। तो ये मोटिवेशन भी हमारे पास था। दैट इज़ वाई वी थॉट ऑफ डिफाइनिंग टेंजेंट वेक्टर्स ऑन मैनिफोल्ड सो दैट डिफरेंशियल ऑफ एफ कैन बी कंप्यूटेड। अब हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं और हम डिफरेंशियल ऑफ एफ की बात मैनिफोल्ड पे कर सकते हैं। Okay, so differential of f, so let me start with two manifolds. Suppose m and n are two manifold of dimension small m and small n respectively. Okay, and suppose there is a map f which is differentiable. Suppose f is a differentiable map from manifold m to manifold n. I want to know what will be differential of f. If it is differentiable, its differential should exist. So differential of f क्या होगा? It should map tangent vectors of manifold to tangent vectors of manifold n. Alright, this is what we expect. So मान लीजिए ये कोई manifold m है और यहाँ पे manifold n है, तो ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए और कैसे होगा। f is a map, so let me start from a point P. Suppose this is a tangent vector at a point P, call it xp. तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि xp की इमेज अंडर डिफरेंशियल ऑफ f will be a tangent vector at fp. This is fp, you may call it q. So suppose image of a tangent vector should be a tangent vector, so here should be some yq. How yq should be defined? अब जो इशू है वो ये है कि ये yq कैसे डिफाइन हो। तो हम बार बार अपने जहन में उस डिफरेंशियल ऑफ f को याद कर लेते हैं जो Rn सेटिंग में था, ठीक है, और वहीं से मोटिवेट होते हैं। बाद में हम देख लेंगे जो कुछ हमने इंट्यूटिवली डिफ़ाइन किया है वो सेंसिबल है या नहीं, इट मेक्स सेंस, परफेक्ट सेंस है उसका मैथमेटिकल या नहीं, वो हम चेक कर लेंगे। शुरुआत में हम थोड़ा इंट्यूटिवली चलते हैं, बाद में उसको टेक्निकली वेरीफाई कर लेते हैं। सो हेयर ऑल्सो आई विल डू द सेम। तो पहले तो मैं ये करूँगा, आई विल कंसिडर ए फंक्शन f और g, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ q, सो इट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, तो अपने आप एक कंपोजिट मैप इमर्ज हो जाएगी g कंपोजिशन f। तो मुझे एल्जेब्रिकली स्पीकिंग मैं सिर्फ इतना डिमांड करूँगा सच दैट दिस डायग्राम इज़ कम्यूटेटिव। अगर डायग्राम कोई कम्यूटेटिव हो जाए तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, इज इट राइट? सो विद algebraic consideration I define my yq in such a manner that when yq operates on the function g, it gives me xp operating on g composition f। अगर मुझे यहाँ पे कोई टेंजेंट वेक्टर yq ऐसा मिल गया जिसकी वैल्यू एट g सेम है एज xp ऑपरेटिंग ऑन g कंपोजिशन f, ठीक है, तो ऐसे टेंजेंट वेक्टर को मैं कहूँगा इट इज़ द इमेज ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ f। ओके, ये डेफिनेशन प्योरली अलजेब्रिक है और इंट्यूटिव भी है। ये स्टैंडर्ड तरीक़ा है अलजेब्रे में कि अगर डेफिनेशन को सेंसिबल बनाना है तो आपका जो डायग्राम इस तरह से बनता है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। वी विल डिफाइन it geometrically also, but this is, so I will call this yq as the image of xp under certain function dfp. I will call differential of f as dfp. ये नोटेशन आर एन सेटिंग में भी यही था, यहाँ पे भी यही रखेंगे. So this is
राइट नाउ द डेफिनेशन. सो इसको डेफिनेशन को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ. हाउ डिड आई डिफाइन डी एफ पी एक्स पी? डी एफ पी एक्स पी is a tangent vector at the point Q which operating on G gives me xp operating on G composition F. Okay, so this is my definition. This is the definition of differential of F. At P है ये differential of F at P. Alright, and this is purely algebraic, as I have been telling you. I must satisfy myself by defining a corresponding geometric definition. So DFP means क्या हुआ? Differentiation. Differential of F at the point P. जैसे Rn में बात करते थे ना, differential of F at a point X और P whatever. उसी तरह से हमने अपने नोटेशन वैसे ही रखे हैं जैसे Rn में हमारे नोटेशन और सिंबल हुआ करते थे. M और N के बीच में तो we have a map F, but between the tangent vectors we have a map T. Yes, so what I am saying actually, you have told me rightly, that F is a differentiable map from M to N, and I am expecting that this F must induce a linear map. Differential of F is a linear map from TPM to T of FP या Q जो भी है. This is linear. अभी मैं कह तो रहा हूँ differential of F by nature is linear. So ये जिस तरह से definition मैंने बनाई है, one can check over here that this differential of F is a linear map. Check it up. This I am leaving as an exercise. Check it up. That DFP is a linear map from TPM to T of FP. बस डेफिनेशन मैंने लिख दी so that diagram remains commutative. I didn't check it up that it is linear. So manifold M के साथ we have several points, infinite points. हर point पे tangent vector मिलेगा सर या सिर्फ जो tangent vector दे रहा हो उसके लिए मिलेगा? अगर देखिए मैनिफोल्ड अगर डिफरेंशिएबल है तो हर पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर मिलेगा. मिल जाएगा. सर डिफरेंशियल पे लेके चल रहा है हमेशा. डिफरेंशिएबल में लेके चल रहे हैं. हर पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर है. हर पॉइंट के लिए हमें हमेशा डिफरेंशियल मिलेगा और वो हमेशा TPM से TQN तक होगा. Is it true? And this should be true for every point too. TPM is also linear space. Yes, tangent spaces are linear. DFP from नहीं, अगर कोई वेक्टर स्पेस V से वेक्टर स्पेस W में कोई मैप है, ये दोनों लीनियर स्पेस हैं, तो क्या कोई भी ऐरा गैरा मैप लीनियर होगा? फिर ये चेक करना पड़ेगा ना. दिस नीड्स टू बी चेक्ड कि ठीक है.